Do you remember the minor character Shabana Khan from the film Baby or the assassin Bob Bishash from Kahani? Tapsi Pannu's Shabana and Shashwata Chatterjee's Bob was so impressive that they got their spin-offs, Naam Shabana and Bob Bishash respectively. So let's take a look at some interesting Hindi film characters that deserve a spin-off. Do let me know your favorites in the comment section below. With 2 SRKs and a host of prominent actors, Deepika Padukone's special appearance as Aishwarya Rathod is a standout performance in Jawan. Her impeccable screen presence and the realistic portrayal is the grounding factor of this movie. Any takers for a female-led Jawan? इस जेल में बहुत सारी माएं जो मेरी तरह बेकसूर हैं। बड़े होकर तुम्हें इन बेकसूर औरतों की मदद करनी है, इनकी जिंदगी और बेहतर बनानी। करोगे ना मेरे लिए? I still remember not noticing Ranveer Singh's Murad walking behind a charismatic Moin Bhai in his entry scene. A car thief and drug peddler, Moin's moral compass, though questionable, is not entirely broken. He is also a lot of fun. I feel Vijay Verma's Moin has the makings of an anti-hero. अपन अकेला मचाएगा रैप, इधर आएगा एमसीबीसी मोइन मार्केट में आ रहा है बोले तो वाह वाह वड़े वड़े वाह. In a movie celebrating the beauty and valor of Rani Padmavati, Aditi Rao Haidari's Malika-e-Jahan Mehrun-Nisa looks breathtaking and holds her own. The first wife of Alauddin Khilji is meekly righteous and definitely deserves a plot of her own. उस रास्ते से आप यहाँ की सरहद पार कर लीजिए। हम पर ये उपकार क्यों? हम ये एहसान आप पर नहीं खुद पर कर रहे हैं। हम अपने सुल्तान को इस गुनाह अजीम से बचा रहे हैं। Rajkumar Rao's transformation from the humble salesman to the badass Babua Pritam Vidrohi hooks the audience. The forceful split personality is hilariously nuanced, and Rajkumar's brilliance makes Vidrohi tower above the protagonists Bitti and Chirag. Vidrohi's spin-off will make for an interesting watch. हेलो, सुन बे, तुम सुनो बे। आज के बाद गलत टाइम पे फोन किया ना तो ऐसी लात मारेंगे कूले पे डिंपल निकाल देंगे तुम्हारे। While Dear Zindagi is essentially an Alia Bhatt film, SRK's character Dr. Jahangir Khan or Jug stands out. The free-thinking, witty and empathetic therapist exudes effortless charm and leaves the audience wanting for more. It'll be great to see SRK play a relatable character again, similar to Sunil from Kabhi Haan Kabhi Na or Mohan Bhargav from Swades. आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें? खास करके जब उस मुश्किल का सामना करने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। Amid the complexities of the Bajirao Mastani equation, the only sane voice is that of Kashi Bai, the rightful and dutiful wife. Priyanka Chopra plays the Marathi Peshwan to the T, acing the accent and demeanor. With such little screen time, Priyanka makes Kashi Bai so iconic that she merits a spin-off. अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। In a film that essentially depicts the unique filial bond, Irfan's character Rana is merely incidental. The protagonists Deepika and Big B drive the narrative, but Irfan the gem somehow manages to steal the spotlight with his humorous charm. I would have loved to watch Irfan in Rana's dedicated spin-off. Which actor do you think could do justice to the role of Rana? ये बर्डन क्या लगा रखा है आपने? इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स को पता नहीं क्या सुख मिलता है। बर्डन होते आप तो दिल्ली के अंदर बैठे होते, कलकत्ता लेके नहीं जाती वो आपको। अरे थोड़ी देर आंख बंद करके शांति से सो जाइए, कुछ बातें कान के अंदर नहीं पड़ेंगी तो प्रलय थोड़ी आ जाएगी। There was a time when Kangana Ranaut grabbed the headlines for her outstanding performances. In a film about Tanu and Manu, the adorable Datto steals the show. Kangana nails the Haryanvi accent and the body language of a modest yet spirited athlete. It'll be a treat to watch Datto's story in a spin-off.
हमारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान यो हमारी सहेली पिंकी हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू छू स्पोर्ट्स कोटे तहत मिस लिया नेशनल लेवल के एथलीट छू जिला जजर 124507 और फोन नंबर में दऊ कोना In Bajrangi and Munni's tale, Chand Nawab enters unassumingly and leaves a mark. Nawazuddin Siddiqui's portrayal of reporter Chand Nawab from Karachi is humorous yet heartfelt. It'll be interesting to witness the storyline of the struggling reporter. को तो बीवी बन के रहना पड़ेगा। तो तुम बनो, तुमसे कोई पूछेगा क्या नाम है तुम्हारा, तुम तो बता दोगे हमारा नाम पवन कुमार चतुर्वेदी है, हम दिल्ली से आए हैं, परमिशन लेके आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं, है ना मुन्ने? A blink and you miss it kind of a character, Pankaj Tripathi's Sadhyaji in Masan is unexpectedly impactful. His enduring simplicity strikes a chord. There are flashes of gentle humor and worldly wisdom in this genial character. Sadhyaji's full-fledged story will be heartwarming. आप अकेले रहते हैं? नहीं, हम पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी अकेले रहते हैं। मतलब दिन में अकेले रहते हैं। Jaggu's Sarfaraz is a green flag, gentle, understanding, sensitive and loyal. While we know he patiently waits for Jaggu all those years, we do not really know what he goes through. It'll be interesting to witness the love story from Sarfaraz's POV. Who do you think could play Sarfaraz now? फोन क्यों नहीं किया? कैसे करता? तुम्हारा खत मिला था। उसमें तुमने लिखा था कि मुझे कांटेक्ट मत करना। मुझे पता था कि तुम्हारी फैमिली का बहुत प्रेशर है तुम पे, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जग्गू कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करोगी। बहुत वक्त लगा दिया यार जग्गू फोन करने में। Irfan as Ruhdar and Haider instantly lights up the screen with his magnetism. He even manages to intrigue the audience with just his voice. This mysterious character that corresponds to the ghost in Shakespeare's Hamlet deserves a dedicated plot. It's a pity that no one can quite match up to Irfan. Who do you think can pull off this character? आप मरने वाले हैं डॉक्टर साहब, मैं नहीं मरने वाला। वो कैसे जनाब? ऐसे कि आप जिस्म हैं मैं रूह, आप फानी मैं लाफानी। Nawazuddin's character Aslam Sheikh in The Lunchbox is curiously chirpy and unassumingly wise. Uncorrupted by hardships, Sheikh brings in optimism and good cheer. There is also a certain vulnerability to him, which surfaces in his conversations with Irfan's character Sajan. It'll be great to see Nawaz play Sheikh again. और मेरी अम्मी हमेशा कहा करती, हमेशा कहती कि कभी-कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। तुम बोले तुम तो अनाथ हो। हाँ मतलब अनाथ, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं, ये बोलने में वजन आता है, सर अच्छा लगता है। One of Konkona Sen Sharma's best performances, Diana is so enchanting that she immediately catches your fancy. In a brief appearance, she weaves magic on screen. A brooding sense of evil pervades as Diana gets closer to Bobo's family. It'll be great to watch Diana's charm in a full-blown story. Remember me? Lift में? नरक से? So sweet. I could just eat you up. The quirky and lovable Monty is the straightforward friend everyone should have. His awkward equation with Konkona is hilarious. Despite all the fooling around, Monty has a wise head on his shoulders. Another Irfan character that deserves a spin-off. I wonder who could even attempt to fill Irfan's big shoes though. तुम पता मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? तुम्हारा ही नहीं पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? Exactly. गाड़ी बाहर निकालो। Take your chance, baby. So that brings us to the end of this video. This channel is in a nascent stage and I look forward to your feedback and support. Thank you for watching. See you in the next video.